solute. Molar mass of solute. W1 mass of solvent. M1 molar mass of solvent. Okay. Then fourth one, Pt is equal to P01 into X1 plus P02 into X2. P0 एक मिनट बोलो। हाँ क्या? हो सकता है मगर ये प्रेशर अपने ऊपर नहीं डालते, दूसरे के ऊपर से प्रेशर डाले। चलिए अपना इसका लगता है एक मिनट सर आपका माइक बंद है। So P1 is a partial pressure of liquid 1, P2 is a partial pressure of liquid 2, P1 is equal to P01 into X1 and P2 is equal to P02 into X2.
So you can get total pressure is equal to P1 P01 into x1 plus P02 into x2. तो ये इतने सारे इक्वेशंस है, उसके ऊपर हम पहला सॉल्यूशन इसके ऊपर सम्स करेंगे. Okay. Take down as I dictate, you write down. A pure liquid has vapor pressure 5.2 into 10 raised to minus 2. 5.2 into 10 raised to 4 pa. Pa का मतलब पास्कल. At 298 Kelvin. When a solute is dissolved, mole fraction of it is 0.02 in the solution. Mole fraction of it is 0.02 in the solution. Find the vapor pressure of the solution. Find the vapor pressure of the solution. Of the solution. तो देखो, a pure liquid has vapor pressure 5.2 into 10 raised to 4 pa. What is this? क्या दिया? So what is given to you? P1. P0 दिया है सर. P0 दिया, pure liquid है. When a solute is dissolved, mole fraction of it, क्या है ये? When a solute is dissolved, mole Solute का mole fraction. solute का mole fraction. Solute का mole fraction का symbol क्या है? X2. X2 और X1? X1. X2. 2. Solute का. X2 yes X2. X2 sir. 0.02. अभी क्या पूछा है? Vapor pressure of the solution. Total vapor pressure. P. Vapor pressure of the solution. P. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हमको और कुछ नहीं मालूम. PT का. ये देखो ये वाला. P0 minus P upon P0 is equal to X2. P0 X2 मालूम है, P निकालने का है. यस. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? P0 minus P upon P0 is equal to X2. Yes. What is P0? 5.2 into 10 raised to 4 minus P upon 5.2 into 10 raised to 4 equal to 0.02. So 5.2 into 10 raised to 4 minus P is equal to 0.02 into 10 raised into 5.2 into 10 raised to 4. So what will be a 5.2 into 10 raised to 4 minus P? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा?
5.2 into 0.02, 4, 104, पॉइंट कितना होगा? कितना होगा? 0.104, 0.104 इंटू 10⁻⁴। मल्टीप्लाई करके देखे ना? हाँ सर, Right. 0.104। आप क्या करोगे? पी को साइड लेके इक्वल पी टू को के वो साइड पी लेके को ओ साइड लेंगे और इसको ये बाजू लाएंगे। That is equal to P. Okay, so P is equal to, ये माइनस हो जाएगा, 5.2 माइनस 0.104, 10⁻⁴ कॉमन आएगा, so 5.2.104 6905, P is equal to 5.096 into 10⁻⁴, 5.096 into 10⁻⁴ power is right. Okay. सर पीए मतलब? PA का मतलब Pascal. Pascal is a Okay, unit of sir. pressure. Pascal is a unit of pressure. तो सर हम लोग प्रेशर का ये सॉल्यूशन निकालेंगे तो पीए लिखने का ना उसके आगे? नहीं, आपको PA रहेगा तो PA रहेगा, एटमॉस्फेयर रहेगा तो एटमॉस्फेयर, जो आपको यूनिट दिया रहेगा एक का, दूसरे का प्रेशर निकालने का, तो जो पहले का दिया रहेगा वही प्रेशर। देयर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, पास्कल, किलो पास्कल, न्यूटन पर मीटर, एटमॉस्फेयर, ऐसा। तो इधर इस सम में एक प्रेशर का यूनिट पा दिया है तो सॉल्यूशन का प्रेशर का यूनिट भी पा रहेगा, ऐसा नहीं, जो दिया रहेगा उसको इस्तेमाल करने का। नेक्स्ट वन, vapor pressure of water at 20 degrees Celsius is 17 mm of mercury. देखो अब प्रेशर किसमें दिया? mm of mercury. Calculate the vapor pressure of the solution of a solution containing 2.8 gram of urea का फॉर्मूला दिया है, in 50 gram of water. बस ये सम है। Vapor pressure of water at 20 degrees Celsius
is 17 mm of mercury. Calculate the vapor pressure of a solution containing 2.8 gram of urea in 50 gram of water. So what is given to you? What is given? P0 P0. What is P0? Vapor pressure of water. 17 Mm. Millimeter. Okay. What is asked? Calculate vapor pressure of the solution. P. किसका सॉल्यूशन है ये? यूरिया का. ओके. कितना यूरिया डाला है? मास ऑफ यूरिया. Mass of urea. It is W2. How much? 2.8 gram. किस में डिसॉल्व किया? Mass of water. W1 gram, and that is equal to 50. Okay, that is equal to 50. Molar mass of urea. Of urea. NH2 CO NH2. अगर कैलकुलेट करेंगे तो 60 आएगा. वो कैसा देखो, NH2 CO NH2, 2 नाइट्रोजन है प्लस 4 हाइड्रोजन है प्लस 1 कार्बन है प्लस 1 ऑक्सीजन है. सो 2 नाइट्रोजन 2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16 28 प्लस 4 plus 12, 16 plus 16, 32, and that comes to 60. 60. So molar mass is how much? Molar mass of urea. It is what? M2, and that is equal to 60. Solvent कौन सा इधर? Molar mass of water. That is a solvent. M1, and water का molar mass 18 है, वो तो मालूम है. H2O. H2O 2 plus Yes, 16, sir. that is 18. तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? P0 माइनस P अपॉन P0 W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1. ये फॉर्मूला. सब फॉर्मूला नंबर 3. Okay. This formula apply. Okay. Now let's see. इसमें सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो. सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो. P0 कितना है? 17 माइनस P 17. What is W2? W2 कितना है? 2.8. M2 60. W1 नहीं, M1 18 अपॉन W1 50. कैलकुलेट करो. 6 1s are 6 10s are 6 3s are
So it comes to 3 8s are 24, 3 2s are 6 and 2, 8.4 upon 500 is equal to 17 minus P upon 17. 17 minus P is equal to 8.4 into 17 upon 500. Multiply this and see anything you can get. 17 into 8.4, 8 4s are 28, 7 4s are 28, 4 1s are 4 and 2, 68, 8 7s are 56, 142.8. 1 42.8. 7 into 56, 5 carry, 8 1s are 8 and 5 13. 142.8 upon 500. And that is equal to 1.428 upon 5. मैं जीरो निकाल दिया, 2 0 निकाल दिया, पॉइंट लेफ्ट साइड में गया. Now I can divide 1.428 divided by 5. 0.5 2s are 10, 0.285. 5 8s are 40, 5 5s are 25, 5 6s are 30. 0.2856, 0.2856, 17 minus P. So 17 minus 0.2856 is equal to P. So 17 minus 0.2856 subtraction करने का है. 10 9 9 9 6 4 4 1 7 16.714, 16.17, sorry, 16.714 mm of mercury. So this is vapor pressure of the solution. Okay. This is vapor pressure of the solution. Next. Next sum. Only 3 sums I'll be doing. कहाँ गए भाई? In an experiment,
18.04 gram of mannitol were dissolved in 100 gram of water. The vapor pressure of water was lowered by 0.309 mm of mercury from 17.535 mm mercury. Calculate the molar mass of mannitol. Calculate molar mass of mannitol. सोचो जरा, think and tell me. थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. सेकेंड सम जैसा ही है. सर W2 दिया है सर, W2 W1. क्या दिया आपको? ये मैनिटॉल क्या है? W2 मैनिटॉल क्या है? मैनिटॉल क्या है? सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? सॉल्यूट. सॉल्यूट. ओके. सो मैनिटॉल mass of mannitol that is solute. Yes, no? That is W2 is how much? 18.04. Mass of water that is solvent W1 and that is equal to 100. Molar mass of mannitol is equal to M2 and that is the question. That is the question. Next. Calculate molar mass of mannitol. Molar mass of water. That is M1 and that is 18. 8 water का तो fix है. अब ये क्या दिया है? Vapor pressure of water was lowered by P दिया सर. P दिया. कौन सा P दिया? नहीं क्या पानी. Vapor pressure of water was lowered by Vapor pressure of solution from 17.535. यानी पहले वाटर का वेपर प्रेशर 17.535 था और उसका वेपर प्रेशर कितने से कम हो गया? 0.30. That means that is what? P0 minus P is equal to 0.309. Vapor pressure of water was lowered by इतने से कम हो गया.
तो that is lowering of vapor pressure दिया है 0.309 from 17.535. That means 17.535 it was the vapor pressure of the water initially. Okay, अब same formula apply करना है. We'll apply the same formula P0 minus P upon P0, that is equal to W2 upon M2 multiply by M1 upon W1. Same formula apply करके आपको M2 निकालना है, right? You find out the M2 by same formula and find out. So this is how you'll proceed. This is 0.309 upon 17.535. W2 कितना है 18.04. M2 you have to calculate M1 18 upon W1 100. So M2 is equal to 18.04 into 18 into 17.535 upon 0.309 into 100. So this will be 18.04 into 18 into 17.535 upon 30.9. 3 6 3 1 3 0 10.3 10.3 और कुछ जाएगा टेबल नहीं. Now we'll have to calculate. M2 is equal to 18.04 into 6 into 17.535 upon 10.3. log से करना पड़ेगा. log of 18.04 plus log of 6 plus log of 17.535 minus log of 10.3. इसका जो भी वैल्यू आएगा एंटी लॉग लेंगे. एंड देन फाइंड आउट. आंसर आता है इसका राउंड अबाउट आंसर इज 184.3. Okay, that is M2. So this was molar mass of solute. Now we'll find out, we'll do the sums of elevation of boiling point. Elevation of boiling point. Okay. Let's see now. Elevation of boiling point.
numericals. Formula. Delta TB is called elevation of boiling point. What is elevation of boiling point? Delta TB is equal to TB minus T0B. What is TB? Boiling point of solution. Solution. What is T0B? Boiling point Boiling point. of pure solvent, right? Of pure solvent. Okay. Now what you want to find out? ये पहला फॉर्मूला है. Second formula. Delta TB is equal to KB into M. What is M? KB, molar elevation constant. Of solvent. What is M? Molality of the solution. Molality of the solution. Third, delta TB is equal to KB. What is molality formula? W2 into 1000 upon M2 into W1. What is W2? Mass of solute. W1, mass of solvent. In gram. And M2, molar mass. Of solute. ये तीन फॉर्मूला आपको यूज करना है. Okay. I'm giving you first sum. Calculate the number one, elevation in the boiling point and number two, boiling point of zero point zero 0.05 molar aqueous solution.
of glucose. Kb is equal to 0.52 Kelvin per molality. This is Kb. Tell me how you can proceed. Is very simple sum. 3 फॉर्मूला सामने आपके हैं, 3 में से क्या यूज करना है वो देखो. Calculate elevation in boiling point and boiling point of 0.05 molar aqueous solution of glucose. Kb दिया. क्या कैसा करोगे? तो थोड़ा सा आइडिया दे दो ना. What you want to find? Elevation in Delta TB. Delta TB. Very good, very good. Delta TB you want to find out. You want to find out delta TB. दूसरा और क्या निकालने का? TB, boiling Yes, point sir. of the solution. आपको डेल्टा TB निकालना है और TB भी निकालना है. तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M. Yes, sir. और M भी दिया है. M का मतलब मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया है आपका. 0.5. ओके. सो डेल्टा TB is equal to KB into M. KB कितना है? 0.52. M कितना है? 0.05. So that comes to how much? 5 2s are 10. 1 carry. 5 2s are 10. 5 5s are 25. 26. 0 0 0 6. 5 2s are 10. 1 carry. 5 are 25. 26. 6 2 0. So it is 0.026 delta TB Kelvin. 0.026 Kelvin. अब दूसरा क्या चाहिए उसे? TB. TB. What is TB? Delta TB is equal to TB minus T0B. You know TB, delta TB 0.026. TB you don't know. T0B मालूम है क्या? T0B तुमको दिया है. It is given not directly, लेकिन कुछ टर्म्स, एक टर्म दिया है, उस टर्म से मालूम पड़ता है कि डेल्टा T0B. सॉल्वेंट क्या है इसमें? व्हाट इज अ सॉल्वेंट? Boiling point of 0.05 molar aqueous solution of glucose. So what is the solvent here? Water. Water. Aqueous का मतलब water. Solute glucose है. Right? What is T0B? T0B is the, what is that? Boiling point of pure solvent. And what is water का boiling point? Yes. Water 100. का 100 डिग्री या 373. ये कैल्विन है ना? So 373. Yes. Okay.
So TB is equal to 373 plus 0.026. So that is equal to 373.026 Kelvin. Solution का boiling point is higher than the solvent का boiling point. यही होता है ना, सॉल्वेंट के अंदर का सोल्यूट ऐड करते Yes, sir. तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. सो इट इज 373.026 केल्विन. ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पेज पर लेंगे. When 3 into इसका माइक चालू है देखो, kg of non volatile substance is dissolved in 50 into 10 raised to minus 3 kg of water. The solution boils at 373.5 Kelvin. Calculate molecular weight of the substance. Calculate molecular weight of the substance. Molecular weight of the substance. Kb for water is equal to 0.052 Kelvin kg per mole. बोल. चलिए क्या क्या दिया देखो और मुझे बोलो. See, unless you people try, I cannot explain you. W2 और W1 दिया है सर. सॉल्यूट क्या है बेटा इधर? 3 into 10 raised to minus 1 kg of non-volatile substance. चलो तो आपको मास तो मिला है, राइट ना. W2 दिया है ना. Yes, नॉन sir. volatile substance. That means you are given mass of solute. How much it is? W2, and that is equal to 3 into 10 raised to minus 3. I'll advise you, जब भी kg में रहेगा उसको ग्राम में कन्वर्ट करो. So it is 3 ग्राम. माइनस 3 निकाल दो, 3 ग्राम. kg into gram multiply by 1000, so 3 ग्राम हो गया. मास ऑफ सॉल्वेंट, कौन है सॉल्वेंट? पानी.
W1, and that is equal to how much? 50 into 10 raised to minus 3 kg, and that is equal to 50 gram. minus 3 निकाल लो. Calculate molecular weight of substance. Molar mass of substance, that is M2. Solution boils at 373.5. TB, sir. TB is equal to 373.5 Kelvin, and T0B is equal to 373 because it is water, boiling point of water. Yes. What else is given? You're given KB 0.52. So what you can apply? Delta TB is equal to KB into M. Delta TB is what? TB minus T0B. Sorry, TB minus T0B. KB. What is M? W2 into 1000 upon M2 into W1. Yes. What is TB? 373.5 minus 373. This is equal to 0.52. W2 कितना है? 3 gram. 1000 upon M2. What is W1? 50. So that comes to how much? 0.5 equal to 0 cut. 5 ones are 5 twos are 0. So 0.52 into 60 upon M. So M2 is equal to 0.52 into 60 upon 0.5. So that comes to 5.2 into 60 upon 5. देखो मैंने ये एक से शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया. So 5 ones are 5 12s are 5.2 into 12. 12 twos are 24. 12 fives are 60 and 2 62. It is 62.4 M2. Okay. 62.4 मोलर मास, ग्राम पर मोल होता है उसे. सर माइक ऑफ है. हेलो हेलो. हाँ हाँ सर सर आया. आ रहे ना? मैं तुम लोग कॉपी करे इसलिए चुप बैठा. ओके, नाउ वन मोर सम. ओके, अच्छा सम मिला.
क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट boiling point, calculate the boiling point of 5% solution of cane sugar bracket C12 H22 O11 molar elevation constant for water is 0.52 Kelvin kg per mole. Calculate the boiling point of 5% solution of cane sugar. Okay. Molar elevation constant. बोलो अब ये कैसे सम कर सकते हैं? How you can do this sum? कुछ नहीं दिया, खाली के भी दिया और 5% solution of cane sugar. Okay. So see here, 5% solution of cane sugar. इसका मतलब क्या? Means बोलो. आज ही किया. Sir, 95% water and 5% cane 5 gram sugar. of cane sugar is dissolved in 100 gram of water. 95 gram of solvent. How you say water? Is it mentioned aqueous दिया है क्या? नहीं दिया. अच्छा, आपने 100 क्यों बोला? 5% का मतलब 5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. देखो 5% का मतलब 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. So 5 gram soluted. So mass of solvent will be how much? No, sir. 95 gram. 100 minus 5, that is 95. ये इसका explanation में दिया हूं. Okay. So 5% solution of cane sugar means 5 gram of cane sugar is dissolved in W 95 gram of solvent. Means आपको क्या दिया है? W2 5. You are given W1 95. You are given KB 0.52. What else is given? You are also given M2, that is molar mass of cane sugar. Molar mass of cane sugar. डायरेक्टली जम क्यों मारता मालूम नहीं.
W1 is 95. Molar mass of cane sugar is equal to 12 into 12 plus 22 into 1 plus 11 into 16. So M2 is equal to 12 12 are 144 plus 22, 11 6 are how much? 16 11s are 176. So it will be 176 plus 144 plus 22. 342. 342. So this is 342. Okay. अब क्या करोगे? What is calculate the boiling point पूछा है. और कुछ नहीं दिया है. इस सम में कुछ थोड़ा सा पॉइंट मिस हो गया होगा. थोड़ा सा पॉइंट मिस हो गया है. सर Boiling केजी point ऑफ वाटर दिया है तो सॉल्वेंट वाटर होगा ना? क्या? ये क्या बोले? केजी ऑफ वाटर दिया है तो वाटर हाँ, right, सॉल्वेंट होगा. yes, kb of water दिया है. Constant water, that means it is water. Solvent is water. Very good, you pointed out. बहुत अच्छा. Because you are given what? kb of water. Okay, चलो. So delta K, delta TB is equal to kb into m. Delta TB, kb 0 point कितना है? 52 W2 into 1000 upon M2 into W1. 052, what is W2? 5. To W1, 95. Five ones are 5 19s are. So this is equal to multiply by 1000 करेंगे तो क्या होगा? 0.52 into 1000, 520 upon 342 into 19. That is delta TB. That is delta TB. और कुछ टेबल जाएगा? Any table will go? 226 are 217 171. Anything else will go? So that is equal to 260 upon, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, multiply by 9. Please tell me 9 ones are 9, 9 sevens are 63, 9 ones are 9 and 6. 32449. 3249. अब क्या करोगे?
इसको डिवाइड करके देखो, you get answer as 0.08 kV. Now what is delta TB? You want delta TB is equal to TB minus T0B is equal to 0.08. TB T08 is 373 पानी का water vapor. So TB is equal to 373 plus 0.08, that is 373.08 हो गया. ये हो गया सम. Now elevation of depression of freezing point. Depression of freezing point. It is similar to this type of sum only. Depression of freezing point. Okay. Numericals on depression in freezing point. फॉर्मूला क्या है? डेल्टा TF is equal to T0F minus TF. T0F minus TF. This is depression in freezing point. T0F freezing point of pure solvent. TF freezing point of solution. ये पहला फॉर्मूला है. दूसरा फॉर्मूला डेल्टा TF is equal to KF into M. What is KF? Molar depression constant. Molar depression constant. M, molality of the solution. Then third, delta TF is equal to KF. M का फॉर्मूला क्या है? W2. अभी तुमको याद होना मांगता है. मोलालिटी का फॉर्मूला W2 अपॉन इंटू 100 इंटू M2 इंटू W1 हो गया. Okay, now I'm doing the first sum. Okay, पहला sum.
the freezing point of a pure solvent is 315 Kelvin. On addition of 0.5 mole of urea in 1 kg of solvent, the freezing point decreases to by 3 Kelvin. Calculate molar depression constant for the solvent. Calculate molar depression constant for the solvent. Okay. The freezing point of a pure solvent is 315. So you are given T0F. On addition of 0.5 mole, W2. what you are given? N2. W2. N2 here. No, it is number of mole there. 0.5 mole. You are given number of mole, Sir. N2. And you are given W1 as 1 kg. Freezing point decreases by 3. So TF will be 315 minus 3, that is 3112 K. पहले सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 315 है, ये सॉल्यूट डालने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट 3 से कम होता है, सो 312 हो जाएगा. क्या पूछा है? KF. So delta TF is equal to KF into W2 into 1000 upon M2 into W1. But this W1 is in gram, my students. So मैं पहले ही बोला था इसको तुम ग्राम में कन्वर्ट करो, केजू को हमेशा हटाओ. हो गया. आप देखो बच्चे लोग, डेल्टा TF क्या होता है? T0F. माइनस TF KF. This part is nothing but N2, weight of substance upon molecular weight, into 1000 upon W1. T0F कितना है? 315. What is TF? 312. KF निकालना है, ये 0.5 है, 1000 upon W1 1000. Cutting. This will be 3 KF into 0.5. So KF is equal to 3 upon 0.5, that is 30 upon 5, that is equal to 6 Kelvin kg per mole. A unit है इसका. So KF का वैल्यू 6 Kelvin kg per mole.
So this was हो गया. Next sum. Okay. When certain amount of sucrose is dissolved in 1 kg of water, the freezing point of solution is found to be 272.8 Kelvin. If the molecular mass of sucrose is 342 and Kf for water is 1.86 kg Kelvin kg per mole. Calculate the amount of sucrose present in the solution. चलो कैसे करेंगे बताओ. How we'll do it? When certain amount of sucrose is dissolved in 1 kg of water, freezing point of the solution is found to be 272.8. If molar mass of the sucrose is 342, Kf for water is 186. You have to find out amount of sucrose. So see here, you have to find out amount of sucrose. That is solute. That is W2. You have to find out W2. You know mass of water, mass of solvent, mass of water, that is W1. 1 kg, that is 1000. You know TF 272.8, T0F 273,
Kelvin, freezing point of water. सर 273 कांस्टेंट है ना वाटर का 273 0 डिग्री सेल्सियस ना, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस ना, वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मीन 273. Yes, yes delta TF is T0F minus TF. 273 minus 272.8, that is equal to 0.2. Yes, that is 0.2 delta TF. So delta TF is equal to KF into W2 into 1000 upon M2 into W1. Delta TF कितना है? 0.02, KF 1.86, W2 हमको निकालना है into 1000 upon M2 342, W1 1000. Okay, so this will be how much? .2 into 342 upon 1.86 is equal to W2 को मल्टीप्लाई करो 342 into 0.2486 34 point sorry, W2 is equal to 68.4 upon 1.86. So that comes to how much? 6840 upon 186. 2 से आगे बढ़ा, इधर 2 से आगे बढ़ा, and if you calculate that, what you'll get is 36.78. डिवाइड करके देखो, you'll get 36.78 gram. Okay, so this was the sum. Okay, okay. Third sum I'm giving that you do it for homework. 1.35 gram of a substance when dissolved in 55 gram of acetic acid produce a depression of 0.618 degrees Celsius in the freezing point. In the freezing point. Calculate molar mass of the dissolved substance.
of the dissolved substance. Kf is equal to 3.865 Kelvin kg per mole. Finish. आंसर दे रहा हूं मैं 153.5 gram per mole. This is the answer. You calculate and Yes, find. sir. What is given? You are given W2, you are given W1, you are given delta TF. आपको डेल्टा TF दिया है Yes, sir. कितना 0.618. 0.618. W2 दिया है 1.35. You are given W1 55. You are given KF. You have सर given वो डेल्टा TF सेल्सियस में दिया है, इसको केल्विन में करना है. कुछ जरूरत नहीं. केल्विन में भी उतना ही आएगा और केल्विन में उसमें भी उतना ही आएगा. देयर इज नो नीड ऑफ कन्वर्जन. और क्या दिया बेटा? KF दिया है. हाँ सर. ओके. डेल्टा TF is equal to KF into W2 into 1000 upon M2 into W1. Substitute करो और M2 निकाल लो. Okay. Okay. Stop for today. Next time I'm starting with ऑस्मोटिक प्रेशर. okay. Osmotic pressure. बेन माइक बंद करो. कौन है ये भाई?